Now, Ajit, now I have described your journey. How did you describe? What were the various feelings when you had come to AMAS? Why did you come to AMAS firstly? How did you choose us to come to us? And then while you were preparing with us, what were the feelings in your mind? How did you tackle those difficult times? Sometimes you may have been depressed, sometimes you may have been elevated, right? So describe that feelings of yours and your preparation. Then we will come to your SSB, because that is Okay. very important for these boys and girls. They are into that, still into that preparation mode, right? SSB अभी पहुंचना बाकी है. Yeah, please start. Okay. First of all, thank you so much, sir, for your right guidance as well as all the marks team that have guided me in the right directions. So about my preparations, sir, in the last year, in the month of August, I had given my exam, and after that, I just came back to my home. And just on 5 of August, abrogation of Article 370 took place. I somehow got stuck at my home. But I was, अंदर से ऐसा था कि कुछ करना है. So I know that मेरा सिविल मेरे परिवार में कोई भी पहले से आर्मी में नहीं है. So I want to make everyone proud on me, and I was putting efforts for that. So I had contacted with my quartermaster, Captain Ashok. So he suggested me about Colonel Maninder Pal Singh, sir, and he was saying that they are conducting classes, and you will find a lot of, you will find a lot of improvement there. So मैंने उस टाइम सोचा भी नहीं. I directly call to Colonel sir, and sir has told me that our course is running and it is midway of 1.5 week. So I decided that I will not waste even my single day, and I had reported on the just next day when I called to MP sir. So when I reported, as I was fresher, having no idea about SSV, and I started grooming myself day by day. And initially when I reported there, and at the time, sir, there was some guy who was having very good communication skills, and I was lacking somewhere, and that's what I know. And I decided that first of all I have to improve my communication skills, and I know that it is not a single day process. I have to put efforts, on regular time. So after that, sir, when I reported there, first of all, I make myself aware about what is SSB. No, पहले तो एसएसबी समझने में भी 15-20 दिन लग जाते हैं कि हाँ क्या है इसमें, क्या क्या टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं. बट ड्यू टू प्रॉपर गाइडेंस ऑफ सर, आई वाज एबल टू नो अबाउट एसएसबी प्रोविजन प्रोसेस, एसएसबी प्रोसेस जस्ट विदिन 3 days, within 3 to 4 days. So after that, when I was being interviewed by some of the assessors, Colonel Bosa, I came to know about what are the mistakes that I am doing. So I noted down all the points that has been said by Colonel MP sir, and especially the morning session of news. I started reading regular newspaper, and the most thing that I even praised today about the suggestion of sir to me about reading books. So I started reading books. And sir said that if you want to improve your communication skills, start reading newspaper and books. So since then, since last 8 to 9 months, I started my preparations, and I came twice, not only once. As I had finished my 2 week course, I again came for 4 week course, and again I took the two course. And yes, not only one. Second, I had taken just to give my interview as well as to make myself practice well, because in a mass you will find a practice is timing, and that is more important when you are going for SSC. So at the last stage of my SSC, I spend my days and night, not only days, and that I feel that I was well prepared, and I am even confident as well. And about other things, about my experience in SSC, it was very well. As sir said that अगर आपने आप पहले से इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एसएसबी आपके लिए एक और प्रैक्टिस हो, तो आपके वो नहीं हो, इसको बटन नहीं हो. So I remember the day when I given first time psych test, तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था, ये हो क्या रहा है. But I make myself practice so well that this SSB just was one more practice for me. So I was full confident about it, and I again want to say special thanks, sir. Thanks to Amas team as well as Colonel MP sir for giving me right directions. Because Yeah. I think that if you are fresher, you had required a right guidance. If you will go to different places, everyone will share his views. You will get confused. Just stick to one place,
and take their guidance and put efforts according to that. That is most important. What happens? I feel that most of guys they went to different institute, but they never put efforts. But efforts is yours, but the guidance should be there. So you have to take guidance from one and put efforts according to that. So that's what I had done for my assessment. Very nice, very nice. So I remember I thought it was first a 4 week, then you came for 2 week, but now that I realized it was 2 week, then followed by 4 weeks, Yes, and then followed by online just before you went for your SSB, yes, right? yes. And certainly I can see a marked change in your communication skills, the amount of confidence, and for that I would also like to thank our communication trainer, Karandeep ma'am. She has seems to be sincerely she has worked with you, and your efforts and her efforts you have come out, and this is now a skill which will be of use to you throughout your career, which nobody can take away from it, right? So okay, so now let's go to your SSB. Let's go to take us to Kapurthala. So how things happened there? What all you did and what did how was the things? How do you find it similar to what we had done practices? Take us to Kapurthala now. So about SSC, firstly, as sir has mentioned that I had to report 29th of March, but due to lockdown, I reported my SSC date again came and I reported there on 11th of July. So first of all, I just want to say you that I feel that I had taken real benefit of this COVID-19 because 3 months I have utilized the 3 months that I spent in the hostels that sir has provided us in the Greater Noida. So I really utilized my this time, and I feel that this will be the life changing period for me because मेरी English का weak थी, and within these 3 months I put a lot of efforts as per the guidance of Karandeep ma'am. So about SSD, I reported there on 11th of July. I had just reported 1 day earlier, but I suggest others if you are going SSD, just report 2 or 3 days earlier. That will be more beneficial for you because when I reported at that time there was rainy season. Not rainy season, there was the rain is so high, so heavy that I was not able to even find a hotels to stay. तो इतना मुश्किल से बाहर आना पड़ा और रात को नींद ही नहीं आई 12 बजे जाके होटल्स मिला एंड क्या होता है एसएसबी वाले दिन एवरीवन इज सर्चिंग अबाउट होटल्स सो आपको 1-2 दिन पहले चले जाओ अपने आप को उस माहौल में डाल लो एंड मेरे को नींद नहीं आई थी रात को मैं सिर्फ 2 घंटे सोया था तो इसलिए माइंड में प्रेशर आ जाता है अगर आपको नींद ना हो तो मैं एफर्ट्स कैसे डालूंगा सही सो इफ यू आर गोइंग जस्ट leave your home 2 or 3 days earlier and so that you will be comfortable to the next environment in which you have to spend 1 day. So then about the SSV, as I had reported, the reporting was 1111 but only 73 got reported and the picture that I got is about 5 men, 3 men in front and one has lifted 1 man on his shoulder and this the scene is of jungle. So everyone was taking theme as किसी snake काट लिया है या snake bite हो गया है या फिर कुछ हो रहा है तो I was one who was well prepared with it and even I had such a lot so I took it as one of the course as they were looking in dress so I took as one of the CIJWS Counter Insurgency Jungle Warfare School so I took one the hero of my story is an officer captain so he was very enthusiastic about the Counter Insurgency Jungle Warfare School course. He went there, so they had performed all the tasks. सिर्फ मैंने I took just one part of it. कि इस पिक्चर में जो उठा के ले जा रहा है कि during their operation practice one of their teammate got injured and he took responsibility, put him on his shoulder as well as with the help of his other course mate. They took him to the nearest hospital and found instructors. After a few days, their course mate got well and they again started their training with full josh. So my story was totally different from others, those who are making on snake bite, and this is only possible because of the guidance that I had got in a mass. That कौन सी चीज़ आपको avoid करनी है, कौन सी चीज़ लिखनी है. So about narration, I feel that my narration was good. It's so good because I had narrated well. I had taken just 1 minute, and I was well prepared. Since last 1 month, I was just practicing about narration part daily 10 times. कि कैसे मेरे को बोलना है जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू द पिक्चर शोन टू अस जो सर ने आपको पैटर्न बताया होगा कि बोलने का क्या तरीका है फीमेल जेंडर बताना है मूड बताना है सो आई वाज डूइंग प्रैक्टिस इन लास्ट 1 month so it was quite okay for me to give narrations with confident and full of content
सो एज सर हैज टोल्ड मी दैट जब आपका पीपीएम डीटी पार्ट खत्म होगा उस समय जो आपको 10 से 15 मिनट मिलेंगे उस समय आपको जितने बार रिवाइज हो सके इतनी बार करना. So actually in my case, I was having chest number 8. So I was in first batch. Immediately I had finished my PPNDT just within 5 minutes. They called us. But within 5 minutes I revised my story 15 times. Oh, yeah. That we can do. When we will move from one place to another place, so due to COVID-19 they have to maintain social distance. So others are just talking, chit-chatting with others. At that time I was recalling the stories. And meanwhile, जो मैंने point वहाँ पे add नहीं किए थे, recall करने से और point आ गए इसमें. So here then during my narration, after narrations in group discussion, I spoke 3 times. Firstly, when the narration started, everyone just आजकल फ्रेशर भी काफी तैयारी करके आ रहे हैं. तो मैं कह रहा हूँ कि फ्रेशर they are also not going with not full of preparation. They are going with full of preparation. So जैसे उन्होंने बोला ग्रुप डिस्कशन, लास्ट स्पीकर ने बोला एकदम सारे बोलने लगे. So GTO sir and the IO as well as the psychologist, they divided our group into 2 parts. In first part, I was in second subgroup. So when the first subgroup has started their group discussion, they somehow reached some conclusion कि इतने character हैं, इतने जे हैं, इतने जे हैं. So I without wasting any time, I make my group about the एक आगे ले गया सीधे. मैंने बोला कि as one of our previous this subgroup has decided that there are 5 members, 5% in the story. I think that as we all agree that, and the picture background clearly depicts that is a forest scene. तो मैंने उसको पहले से उनको एक मुद्दे पे ला दिया कि इतना है. सो देन आई लिसन टू अदर्स. When everyone was interrupting others, I was just listening to others. I again spoke once and I had given whenever I spoke with logic कि जे अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसको सपोर्ट करने के लिए जे चीज है. तो मैं 3 ही बार बोला एंड आई वाज फुल कॉन्फिडेंट दैट मैं स्क्रीनिंग हो जाऊंगा जैसे मैंने 3 बार बोला था. बट जस्ट after an hour our result was declared and my name was called. At the time, out of 73, 22 got screening. Okay. So in my cases, then we were divided into subgroups. That is 8 and 7. Okay. So when I was in first group, as earlier my chess number was 8 and now it is moved to 4. In my group, especially in my group, 4 guys out of 10, 4 guys got screening. So and even the most important thing is that the fresher they are coming from YLC course. In my especially in my group there are 2 guys from YLC and 2 from Air Force. So they are just अपने आप को बहुत smart समझ रहे थे. And what happened after the finishing of our one day and one of the guy came to me and he was started asking me about अरे गलवान वैली के बारे में क्या है इशू है. तो मैंने उसको बताने लगा कि हाँ ये है क्योंकि अब कोई पूछे तो उसको नहीं बताओ. So वो ऐसे कोर्ट ऐसे डांट मारने लगा कि यार तुमने तो बहुत बड़ा है. आई काउंट टू नो दैट किस टाइप का कैरेक्टर है इसका तो उसके साथ मेरे को बहस नहीं करनी. तो विदिन 5 days वो लगातार मेरे शेर पे आता रहा. मैं बुक खोलूँ मेरे पास बैठ गए. तो आई वाज जस्ट इग्नोरिंग हिम. मेरे को पता है कि ये एयरफोर्स वाले है ना होते काफी तेज हैं. दे आर गुड. देयर इज नो डाउट दैट दे आर हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. बट कहीं हर आदमी का कैरेक्टर एक जैसा नहीं होता. बट अगर आपको एसएसबी में कहीं ऐसा लगे तो आपको सिर्फ इग्नोर करना है और इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं देना क्योंकि it can only also impact on your performance. So then about second day, it was quite well and even जिस दिन मेरे को मेरा साइक पार्ट खत्म हुआ रात को मैंने 2 टेबलेट खाए. तो बुखार काफी हो गया था मेरे को. काफी बुखार हो गया था क्योंकि रात को सो नहीं पाया था. दिमाग को बहुत प्रेशर दिया समय OER सॉल्व करने में PPGD लिखने में बोलने में. So I was not feeling well and I took 2 tablets of fever. And in the morning, I was feeling well and I had given my best. But fortunately, out of 11 stories, of 6 that was there and which I had already practiced in a mass. Right. So, 6 तो पहले की वही थी and I had made up 2 or 3 themes on every picture that I had practiced. It was quite easy for me. And other than that, remaining 5 pictures, I made a story that is relevant to the picture and as far as suggested that जो logic, practical and relevant. So this I also keep this thing in mind. I had written my story, and about that, and I also about that I completed entire that is 60, and I was full confident कि मैंने जो लिखा है काफी सोच के लिखा. तो क्योंकि मैंने बैट की काफी डिटेल में प्रैक्टिस की थी, and I had practiced nearly 600 to 700 बैट. फर्स्टली मैंने सोच के लिखा था, फिर उसी सोच को टाइम में डाला था, फिर टाइम प्रैक्टिस हुआ था लास्ट में. So I was well prepared for that. And followed by SRT की मैंने इतनी
अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी जहाँ मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा देर शोर शोर के कर रहा था। तो एसएसबी में इन एसआरटी माई स्पीड वॉज नॉट सो गुड एंड आई वॉज एबल टू कम्प्लीट ओनली 36। तो मैंने सर को बताया कि सर एक 36 हो गया, गड़बड़ होगी लग रहा है। तो बाकी सब अच्छा गया, तो 36 इधर से कहीं में डोल ना हो जाए। SD, as sir has told us that how to write SD, and as per that I have written my SD as well. So I Right. was able to. So let's go to your. Did you have the interview on the psych day or did you have it after GTO? On the same day, sir. On the same day, I was What having was the interview. interview experience? How was the interview? How much time did they take? What are the important questions? Leave the CIQ. CIQ, I'm sure you must have answered well. Apart from the CIQ, what are the important page where he asked you GK current affairs, what all things? Yeah, please. Okay. So firstly about interview. So when I entered the room, sir has told me that yes, you had taken your lunch. मैं, yes sir. Tell me that what you was having. So थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अगर उस टाइम अगर कुछ खाया तो ध्यान रखना कि ये खाया, तो वो पूछ सकता है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए। बट आई वॉज फुल कॉन्फिडेंट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस दैट आई डिड इन नमाज। मैंने जैसे बताया कि आपको 2 3 4 बार आए थे, इतने बार मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो इतने बार मैंने अपनी अपनी गलती को नोट डाउन किया था कि जहाँ पे मैंने गलत किया, जहाँ गलत किया। And Baki CIQs that sir has said, and I had practiced it well. Not only once, I think near about 15 to 20 times. Daily रोज का एक बार CIQ पढ़ता था. Firstly, I started when I first time gave interview in Amas. After that, I realized that ये तो बहुत simple नहीं है, कहीं बोलना 1 घंटा बोलना और लॉजिक से बोलने की it's not so easy. As sir has mentioned that इंटरव्यू तो 45 मिनट का होता है, बट उसके लिए आपको 45 और वो करने देने पड़ेंगे, ताकि अब तभी जाके आपका 45 मिनट अच्छे होंगे। तो मैं काफ़ी वेल प्रिपेयर था, एंड द क्वेश्चन दैट वाज देयर इट वाज वो जो आउट ऑफ ब्लू नहीं था, आई वाज वेल प्रिपेयर। तो मैंने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी। वो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन थे, आई शेयर विद यू दैट। फर्स्टली सर ने बोला कि आप कैसे इंस्पायर हुए आर्मी आने में, आपके परिवार से आर्मी में नहीं तो कैसे इंस्पायर हुए। सेकंड था आप ऑफिसर बनने के लिए कैसे इंस्पायर हुए, तो आपका गोल क्यों, आप क्यों अफसर बनना चाहते हो। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई हैड प्रिपेयर्ड एंड आई हैड गिवन माय क्वेश्चंस विद फुल लॉजिक, एंड दैट जो मेरी रियल जिसके लिए मैं करता था मैं सिंपल बताया था उसे, एंड मेरे सारे क्वेश्चन कोरिलेट करते थे आंसर सारे एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं था कि डिफरेंट थे। If I am from village, if I was not having such facilities and awareness, I told him that I was not aware about ND and other exam during my 12th because of lack of awareness. So then उसके बाद उसने बोला मेरा why do you want to become an officer, and my answer was also related to that कि क्यों मैं बनना चाहता हूँ। तो then he had also asked me that yes, most of the guys were saying that आप सुबह उठ के चाय लाते हो, डिनर लाते हो अपने उस्तादों के लिए, तो आपको गुस्सा नहीं आता। जस्ट मेरे को आई हैड डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कल कम टू नो दैट ये मेरे को जहाँ फंसाना चाहता है। तो मैं सुना उनको काफ़ी, मैंने बोला सर एज आई हैड ऑलरेडी मेंशन यू दैट आई ब्रिंग जस्ट ओनली टी फॉर द सीनियर इन द मॉर्निंग एंड बीइंग अ जूनियर मोस्ट इन माय प्लेटून इट्स माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो बोलता है कि यार चलो कहीं तो बोल रहे हैं जेल आना तो आपकी यूनिट में नहीं है। मैं बोला सर हमारी यूनिट में सीओ साहब ने ऑर्डर पास किया है कि कोई भी लाइन में खाना नहीं खाएगा। सो हर आदमी सब इतने पंचुअल हैं कि कोई खाता ही नहीं है, तो लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर अगेन ही आता है एवरीवन फॉलोज द ऑर्डर। मैं यस सर एवरीवन फॉलोज द ऑर्डर। तो इस तरह से आई हैड प्लेड सम की जगह पे मैंने सेफ खेला। मेरे को पता था कि हाँ इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस दैट आई डिड अर्लियर कि मैं फंसा नहीं कहीं पे। जब भी उसने ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे आई वाज एबल टू गिव कॉन्फिडेंट रिप्लाई टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड उसके बाद कौन सी रेजिमेंट या कौन सी यूनिट ज्वाइन करना चाहोगे, आई सेड दैट पैरा सर के बारे में सर हैज मेंशन दैट सर हैज इवन टोल्ड दैट जो भी करोगे उसके डिटेल में पढ़ लेना। तो पैरा सर आई वाज हैविंग वेरी डिटेल नॉलेज अबाउट पैरा सर। इवन द इंटरव्यू ऑफिसर वाज आल्सो फ्रॉम ही हैज आल्सो डिड प्रोविजन कोर्स ऑफ पैरा सर। Profession, okay. So I told to my interview officer in detail about पैरा सर, in detail. So then उनको लगा कि यस इसने क्या पता प्रिपेयर करके आया, सो लेट आस्क हिम अनदर अपार्ट फ्रॉम पैरा सर व्हिच रेजिमेंट वुड यू लाइक टू जॉइन। मैं बोला सर कैन आई थिंक फॉर व्हाइल। मैंने टाइम लिया, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आया मैंने टाइम लिया 10 सेकंड 20 सेकंड लिए कि मैं थोड़ा सा, फिर मैंने देखा कि ऑन विच रेजिमेंट आई वाज हैविंग अ गुड नॉलेज। तो मैंने बोला कि आरटी, बोला वाई आरटी, फिर मैंने थोड़ा सा रीजन दे दिया क्यों आरटी, एंड देन ही आस्क्ड मी अबाउट व्हाट आर द गन्स दैट दे आर हैविंग, एंड एज आई वाज वेल प्रिपेयर्ड after attending sessions in the mass that is about military knowledge conducted by the brigadier sir. So I was well prepared for that and I had given my answer and he was full satisfied with it.
And there was one more question is that, Ajit, let us suppose that after 4 years you will become an officer, lieutenant, and you will be posted in some unit. So tell me the few recommendations that you would like to give your commanding officer as in terms of administration or training. As I was well prepared, I shared these things with sir, what I said. So, but even in these questions, I took time. मैं बोल सर क्या मैं बोल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए ताकि दे विल नॉट एबल टू ना रियलाइज कि हमेशा हम वो पहले से प्रिपेयर क्यों आंसर बता रहे हैं थोड़ा सा आपको भी सोच के बोलना है कि हाँ एकदम नहीं बोल देना इफ यू नो अबाउट समथिंग जस्ट टेक टाइम तो वो आपका है ना एक रियल आंसर निकलेगा इवन इट वाज माय रियल आंसर बट उसको दिखाना भी बहुत जरूरी है कि हाँ जी है So, how did the interview like? Towards the end, what all did he ask you? Towards the end of the interview. At the end, he asked me about national and international news, and I was well prepared. You are About 5 national, 5 international news. Yeah. And at the end, he said, if you want, let's go to GT round now. At the end, he asked me one question that, okay, Ajit, no, if you want to ask me one question, any question you can ask. I said, yes, sir. So मैंने asked him because MP sir suggested that you can ask that share your best experience in as a colonel, as a commanding officer, as a officer. So he told me that सबसे मेरा अच्छा experience था लाइफ का बेस्ट पढ़ा जब मैं CO बनता किसी यूनिट का तो वही एक अलग क्वेश्चंस मैंने पूछे So let's go to Ajit to your GTO ground and quickly tell us how did you start, what was the group like, how did you have interpersonal skills with each other, and how did you perform in various tasks, especially the command task at the end, right? Okay. So about interview, about GTO, and I feel that if you are taking coaching in a mass, if you have taken physical classes, even at present, I feel that sir is doing a great job by giving a feel of physical classes in online. So that will be a very good, and because of the guidance of sir, I had never faced any problem in GTO. Okay. So if you, first of all about the starting part in group discussion, the topic is about COVID-19, and one is about COVID-19, second is about Indo-China, because these were at that time these were in the front, these were the headlines. Yeah. So as I had gathered a lot of facts and examples to that, and I spoke nearly 4 to 5 times. I took initiative in both the GD I started with fact. If I spoke that we had to end up trade with China, then why? But will be the benefit. So मैंने लॉजिक के साथ कुछ कोड करने बोला था तो कोड क्या कर लेना कोड भी बोले मैंने बीच में and even I share this code with Aman as well. अमन कोई वही GD है उसने कोई बोल दिए. Classic. He got the same topic as you. हाँ सेम है जो मैंने कोड बोला उसने वही बोल दिया. मैं उसको बता दिया था मैंने बोला ये कोड बोल देना अगर आएगा तो वो मैं बता रहा कि ये आएगा तो मैंने ये बोल दिया सीधे. तो फिर it was very good about GT and GD. In the second GD we are having 3 GD, not only 2. So 3 group discussions were there. वही अब the second third is about army. Those who are from army background, they should some knowledge about army and like what are the topics that can be asked to him. So as I well prepared about it because I had attended physical classes and we had a group discussion on regular basis. So I was well prepared and I had choose a league. इसमें क्या होता है आपको सेव भी खेलना पड़ता है. तो क्वेश्चन टॉपिक ये था कि अभी जो सोल्जर हैं तो उनकी डेथ रेट अभी बढ़ रहा है तो क्या रीजन है आर्मी की प्लानिंग की कमी है ट्रेनिंग की कमी है या फिर एस्पायरेशन है. सो आई चूज द लिट एस्पायरेशन एंड आई हैड गिवन वेरी बेस्ट एग्जांपल टू दैट. तो कहीं दूसरे का आर्मी की प्लानिंग फेलियर है होनी है तो उसमें आपको थोड़ा सा सेव के लिए अच्छी सी लीड लेकर नहीं उसका पॉइंट 2-3 बार भी बोलोगे इट्स ओके. बट इन फर्स्ट GD यू हैव टू शो दैट यस यू आर हैविंग ग्रेट नॉलेज. सेकंड में आपने 2-3 बार बोल दिया इट्स ओके. So second is about GP, and in GP I was not able to take initiative because the guy as our story has finished and even a guy from biology course he just started it. But when I feel that एक group is going forward, but there was one guy who always dragging us backward. कि वो बोले कि हमें चौथी लीड जो होती है वो पहले ही लेनी है, जो फोर्थ प्रायोरिटी वो पहले लेनी है, वो माना लास्ट तक नहीं माना, तो वो बोले पहले ही लेनी है. I was giving the class the same example as some of them will start with the least priority as the first priority. I think that happened with you also. तो जो बायसी वाला था he was well prepared. He has given all the 3 layers. इसमें एक ही सीक्वेंस में बोल दिया कि ये होना चाहिए. थोड़ा तो अगर आपको बोलना भी है 1-2 बताओ देन दूसरों को 20 लो. एक नहीं अगर आपने सारी प्रायोरिटी अपनी बता देंगे तो उसने सारी प्रायोरिटी बता दी अपनी.
इतना लंबा खींच लिया उसने। तो फिर मैंने देखा कि ये आगे नहीं जाने दे रहा, तो मैंने ग्रुप को आगे बढ़ाया आगे। मैंने बोला कि एज वी आर एग्री विद द चेस्ट नंबर 2 एज ही हैड सजेस्टेड सम प्रायोरिटी, सो आई फील दैट वी हैव टू मूव फर्दर। सो फिर भी उसने पीछे खींचे, फिर भी पीछे खींचे, तो फिर लास्ट एट द एंड आई मैंने गिवन पॉइंट दिए, जैसे आपने बोला कि अगर बोल नहीं पाओगे तो कुछ एग्जाम्पल देना कि जहाँ से किलोमीटर इतने काम है तो हमें जहाँ जाना चाहिए, गाँव में एक चीजें मिल जाएंगी। सो आई गेस आई गिव लिटिल एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू सपोर्ट अदर। तो फिर एट द एंड आई नॉमिनेटेड हिम हु वाज ड्राइविंग अस, just two guys who raised their hand, I said that just number 1 you can speak। तो उसने अपनी पूरी बोल दी जाके। Oh my God। तो वही अब मेरे को पता था कि क्योंकि ग्रुप कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं था, Right। ग्रुप कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं था, तो कोई इसमें इनिशिएट करने का कोई बेनिफिट नहीं था। अब मैं Yeah। किसके अपॉइंट करूँ? तो मैंने बोला चल कोई नहीं, लेट्स गिव हिम अपॉर्चुनिटी बिकॉज़ ही इज द वन हु इज टेकिंग अस इन बैकवर्ड। तो वो उसने खत्म कर दिया उधर। फिर मैं समझ गया कि ये कर गया, वो गड़बड़ होगी इधर। हाँ। फिर अबाउट पीजीटी में मेरा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं। एंड पीजीटी में जस्ट एज सर हैज सजेस्टेड दैट कैरी लाइट वेट लोड, लाइक बल्ली ले लो, जाके रास्ता ले लो, तो आपका दिमाग भी काम करेगा। अगर लोड ले लिया तो फिर लोड उठा के दिमाग का काम करता है। तो आई हैड टेकन रो विद मी, एंड जैसे ही फिनिश हुआ जैसे फर्स्ट मैंने इतना आइडिया नहीं दिए, फर्स्ट सिंपल था दैट फ्लैंकिंग थी, कोई बेनिफिट नहीं है इसमें देने का, वो सारे आगे आ गए। जैसे सेकंड में पहुंचे एंड जीटी वर सेइंग दैट ओनली 3 कैन स्टैंड इनसाइड एंड अदर्स विल स्टे आउटसाइड, इफ समवन वांट टू गिव आइडिया ही कैन कम, ही कैन रिप्लेस विद द गाय हु इज इन मिडल। तो मैं जैसे उन्होंने पट्टा रखा, मैंने बोला कि कैन आई गो, मैंने परमिशन ली उनसे, कोई मना करेगा आपको, पूछ लेना उनसे कि ग्रुप से मैं आगे जा सकता हूँ, तो बोले यस करना, तो मैं चला गया आगे। और इवन वन इंसिडेंट अगेन हैपन टू मी, वही चेस्ट नंबर जो एयरफोर्स का था 1 था जिसने वो किया था, सो मेरा रेड पॉइंट टच हो गया। तो उसने ही शोटेड एट मी दैट चेस्ट नंबर 4 बट यू हैव डन, यू हैव ब्रोक द रूल। मैंने इसको लाइटली थोड़ा लिया, मैंने बोला यस इट्स माय मिस्टेक, मैं दोबारा फटा लिया, पीछे गया, दोबारा आ गया। तो रैक्टर हैज टोल्ड दैट अगर ऐसा हो जाए तो आपने आराम से पीछे अपनी गलती मानी, गलती हो जाती है ना, गलती को कोई गलती किसी से हो जाती है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी हैव डन दिस मिस्टेक एंड वी आर अगेन उसको ठीक कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर पीजीटी में जब सेकंड में आए, जब भी डिफिकल्ट आइडिया देना हो, मैं बीच में जा रहा था, आइडिया दे रहा था, एक दो दोबारा पीछे आ रहा था। जैसे मेरे को लगा, मैं आई वाज गिविंग अदर अपॉर्चुनिटी एज वेल टू गिव देयर आइडियाज, बिकॉज इन सेकंड टास्क आई हैड गिवन 3 आइडियाज दैट वाज ऑफ हाई लेवल। तो फिर जब तीसरे में पहुंचे, फिर मैंने 2 आइडिया दिए, फिर पीछे। सो एकदम नहीं बोलना ना, दूसरों को मौका भी देना। एंड आई वाज सेइंग दैट इफ समबडी इज हैविंग गुड आइडिया, काफी आइडिया आपको देने के मौका मिल गया। एचजीटी में भी ऐसे ही होगा, एचजीटी में यू मस्ट हैव गिवन मोर देन हाफ द आइडियाज। just in AGT the 4 ideas were there and out of them 2 were mine. Good। Now let's come to the lecturate। About lecturate, I had prepared 90 lecturate, but उसमें से कोई topic नहीं आया वहाँ पे। Okay। But the efforts of 90 lecturate definitely helped me a lot. I was reading regular newspaper and there was 4 topic and that was about SSB, NOTA, insurgency and one was that वो अभी मेरे को याद नहीं है। So मेरे insurgency के ऊपर बोला and मैं थोड़ा सा data, I was having 40% of knowledge and with confidence I took my knowledge into 80%, 80 to 90। कॉन्फिडेंस से मैंने बोला 3 मिनट एंड मैं अच्छा बोला, ऑर्गेनाइज किया टॉपिक को एंड आई वाज फीलिंग हैप्पी दैट इवन द टॉपिक वाज नॉट हाई लेवल बट आई हैड स्पोकन वेल। So I was able to like 3 In your minutes. obstacles, how many you did in your obstacles? And sir, I did 14 sir, but actually I could do more, but what happened, उन्होंने 2 कटे छोड़ दिए थे, उसकी वजह से कई बार मेरे obstacles के आगे दूसरा आगे खड़ा हो गया। हाँ, तो उसकी वजह से मैं 2-3 जगह रुकना पड़ा मुझे। 14 is a very good number। Okay, now tell us about your command task. What kind of command task you take? So firstly, so about my command task, it was difficult. It was difficult one. It was difficult one for GTO sir, not for me, because I had taken guidance from sir. तो मेरे को सबसे लास्ट में बुलाया एंड जिसको सबसे लास्ट में मेरे को लग रहा था अभी तक बुलाया क्यों नहीं, सबसे लास्ट में बुला रहे हैं। फिर मेरे को पता चला हाँ लास्ट में क्यों बुलाया, क्योंकि अदर ही जस्ट गिविंग द वेरी सिंपल टास्क, डायरेक्ट ब्लैंकिंग। सो व्हेन आई रीच देयर, इवन मेरे काफ़ी अच्छा ग्रुप में मैंने काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनाई थी एंड आउट ऑफ 8 इन माई ग्रुप 4 हैज कॉल्ड मी फॉर एज अ टीममेट। तो 4 बंदे ने मेरे को बुलाया। तो मैं देख रहा था उनके बहुत सिंपल टास्क थे,
एंड जब मैंने अपना देखा कि ये तो वही ट्राइंगल वाला वो है जो सर ने बताया हुआ है, तो आई वॉज फीलिंग हैप्पी। सर ने बोला कि अगर आपको जितना डिफिकल्ट मिलेगा तो आप सोच लेना कि हाँ जीटीयू इज इंटरेस्टेड इन यू। तो वही खुशी खुशी में मैंने क्या किया, मेरे को आइडियाज काफी आ रहे थे, आइडियाज बहुत आ रहे थे। मैंने सोचा एकदम आइडिया नहीं लगा था, तो टाइम लेके लगाता। मैंने एक आइडिया लगाया, फिर सोचा दूसरा लगाया, फिर उसने मेरे को ही सेड दैट ओके कमांडर यू कैन गो। सो मेरे को लगा कहीं मैं मार नहीं खा गया। मैंने सोचा क्या पता, आपने जब तक आइडिया दूंगा इतने सारे तो वो सोचेगा यार इसको इतने आइडिया दे रहा है, तो मैं थोड़ा टाइम से लेके देता हूँ, सोच के देता हूँ। बट जहाँ पे ये ट्रिक मेरा काम नहीं किया और उन्होंने मेरे को भेज दिया 2 आइडिया देने के बाद। अच्छा, ऐसे। तो फिर मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, मैं यार काफी डिफिकल्ट था, पर उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं पूछे, 2 ही आइडिया दिए सारे मैंने। हाँ। और ये रियली मेरे को लगा कॉन्फ्रेंस में जाके, जब मेरे से जीटीओ वाले क्वेश्चन आए हैं सारे कमांड टास्क के सारे, पूरा जीटीओ सब जीटीओ वाले पूछा कि कैसे कैसे किया, कैसे तैयारी की, एक एक चीज पूछी। तो मेरे को लगा कि कमांड टास्क में उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे कर दिया। तो तब मेरे को, बट आई वॉज टू कॉन्फिडेंट इन माई कॉन्फ्रेंस, आई हैड गिवन आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन विद फुल डिटेल, बट वो मौका नहीं दे रहे थे। एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, आधा आंसर दूसरा, एक आधा, सो 10-10 मिनट 10 मिनट उन्होंने मेरे को काफी ग्रील किया, बट आई वॉज टू कॉन्फिडेंट। तो विकास सर हैज टोल्ड अस अबाउट द कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर। तो अगर आपने कोई चीज पहले कर ली है तो उस समय आपको ऐसे कुछ नया नहीं लगता। Right. तो इट दैट हैपेंस विद मी एंड आई वाज ड्यू टू दिस आई वाज सो कॉन्फिडेंट। So Ajit, I think you have so vividly described every aspect of your SSB preparation as well as your SSB live SSB in Kapurthala to our students. There's a very limited number of students we are having, about 20, 22. Now I would open up any questions from anyone who want to ask because there are about 10, 12 of them who are SSB ACC aspirants. Others can also ask. SSB is the same for everyone, whether it is for ACC or it is for ND or IMA, it is the same, or with Air Force. The procedure, the tests are all the same. However, the ACC may like to ask him a particular question related to the defense knowledge and all. So you can ask the questions. Just raise your hands and I'll invite you. First preference would be to the AMA's present batch students. Anybody want to ask anything? Give your name and ask. Yes, number 19, sir. 19. Okay, Dheeraj, yeah, what do you want to ask? Yes, sir. First of all, congratulations, sir, for your success. Thank you so much. Sir, I want to ask about personal interview. Okay. Yes, sir. About personal interview, which would you like to ask? I have to tell that how I prepare. Like about the. Okay, wait. Everybody listen. He has already described you everything. Now be very specific if you ask. Like if you say personal interview, don't expect that you start or I'll start, 45 minutes interview. If there's any particular thing you want to ask, then ask. Okay, anybody else? Do you think, Dheeraj, in the meantime, you think what you want to ask about interview? Then you ask the question. Anybody else in the meantime who has a question in his mind? Okay, since nobody has got a question, doesn't matter. I have some questions to ask Ajit. So Ajit, how did you handle, was there a fish market in the GD or it was a very simple GD, everybody giving chance to others in your GTO ground? Sir, in GD, some of guys had made a group and वो बोल रहे थे कि हाँ जेंटलमैन इसको मौका दो बोलने के अलावा, इसको मौका दो। तो मेरे को पता चल गया कि हाँ इन्होंने थोड़ा सा वो किया हुआ है। तो बट मैं आई वाज बेस्ट प्रिपेयर्ड एंड इट वाज नॉट सो फिश मार्केट। कई जगह पे हो रहा था कि 3-4 बंदे इकट्ठे बोल रहे थे, बट आई हैड नेवर स्पोकन दैट व्हेन 2 or 3 guys आर स्पोकिंग कंटिन्यूअसली। जब भी उसका मेरे को लगा कि यहाँ फिनिश होने वाला है, आई रेज माई वॉइस, थोड़ा सा मैंने पिच की वॉइस और अपना पॉइंट बोल के फिर देन एंड कर दिया। मैंने किसी को इंटरेक्ट नहीं किया एंड फिश मार्केट तक ऐसा प्रेशर आई डोंट फील सो मच क्राउड इज देयर। हर कोई बोल रहा था और वी आर गिविंग अदर अपॉर्चुनिटी एज वेल। पर 3-4 थे जो बार बार बोल रहे थे, तो बोल ज्यादा रहे थे और सेंस का कम बोल रहे थे। दैट इज द थिंग आई हैड लर्न इन मास्टर, इफ यू विल स्पीक विद सेंस। So how did you choose the lecture topic from the 4 topics, since you said that by chance, though you had prepared so well, those 4 topics you had not prepared? So how did you choose? What thought came to your mind? How did you choose that topic? Sir, firstly, the one was SSB.
तो एसएसपी के बारे में मैंने सोचा कि इट्स विल नॉट हेल्प मी दैट एसएसपी के बारे में क्या बताऊंगा. It is very simple. Then about Nota. Nota, I was not having deep knowledge. About insurgency, I was having some knowledge. Like what is insurgency, what are the area in which it is spread, when it was started, and what are the insurgent organizations, what will the impact of it. I had divided my topic, क्या इसका impact क्या होगा, what are the steps that has been taken by government, and what are the expected solutions. So इस तरह से I was having some idea about this topic, insurgency. So That's why I. because you had some idea, you picked up the topic and you converted it into signal. Right. Now, in your interview, just before your interview was about to start, so what was in your mind? What did you think? What did you prepare? Did you revise anything or your cool mind? Sir, I had I did revisions a lot earlier. So in SSB मैंने अपने दिमाग पे इतना जोर नहीं डाला. मैं थोड़ा नींद ली, आराम से सोया था और मेरे को पता मेरी बारी आने वाली, तो मैं नहाया. Then after lunch I was the one who is having an interview. जैसे लंच खत्म हुआ वहाँ पे गया तो मेरे को 10 मिनट पहले वेट करना पड़ा वहाँ जाके. तो उसमें मैं सोच रहा था कि ये कैमरे तो नहीं लगाए, मेरे को बात कर रहे हैं. देख रहा था. तो वहाँ मैं वेट किया 10 मिनट. तो वो थोड़ा पता नर्वस था कब अंदर जाऊँ क्या होगा. तो बट एक्चुअली मैं जब अंदर गया तो मेरे को कुछ ऐसा फील नहीं हुआ. इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अर्लियर. तो काफ़ी इजी था मेरे लिए इंटरव्यू में. और इंटरव्यू ऑफिसर. And as far as psych is concerned, did you revise anything for the psych or that also you had practiced a lot? Like you said, you used to do every day morning. So that means वहाँ SSB जाके आपको किसी चीज की रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी. आपने ऑलरेडी फुल प्रिपरेशन के साथ गए हुए थे. डेटा डायरी थी साथ में? Yes, I was having 4 data diary. Data diary. So मेरी इतनी सर मैंने I had not only complete my syllabus, I had practiced it a lot. तो मेरे को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी वहाँ पे. एंड जो 5 days थे आई हैड स्पेंड विद फुल ऑफ एंजॉयमेंट. So others are just reading and I was just sleeping and enjoying. Yeah, good. That was the right attitude because if you remember, I showed you some slides in which I said last day in the train onwards, stop studying about SSB.